As Delhi continues to choke, it experiences the same plight every year. Its residents are subjected to the smog every year around the festive season, ahead of in fact the winter season, often leading to medical concerns for its residents. Meanwhile, the politicians are always busy in pointing and point scoring and one-upmanship, but no one till date has taken any real responsibility to solve the issue choking the Delhiites. NewsX has introduced a campaign wherein we are trying to find out from the people whether pollution is a voting issue for them, considering that Delhi goes to elections very soon next year. Viewers, please also note that for the duration of this telecast, our phone lines will be open for all of you to call and voice your opinions about, if at all, pollution and Delhi smog issue is in fact a voting issue for Delhiites or not. All right, joining me on the broadcast are my colleagues from near Shakarpur Market and Lakshmi Nagar, Sambhav and Mehendi from Chandni Chowk. Thank you for speaking to us at this point. Mehendi, coming to you first, what exactly has been your understanding after speaking to people and now the place that you're coming at Chandni Chowk? What is the opinion of the people about pollution being the voting issue? As far as there are freebies in Delhi concerned, or there are often very local issues like road and infrastructure in the national capital that comprises as a long list of issues which become the electoral vote bank for the parties. But when we talk about pollution, do you think it's the time at this point when election in Delhi are just around the corner that people in Delhi feel this in fact becomes a pollution issue? Mehendi. Well, yes, Simran, we are in Chandni Chowk right now. It is a highly populated area and we are joined with some of the people also, and we'll try to understand the politics behind the air pollution also and what is the genuine problems of the people of Delhi living here, because it has become a smoke show right now in Delhi. One of the Delhiites is with us, two people are with us. Rajiv ji, what do you think regarding the air pollution? That assembly polls are very near of Delhi. What do you think, that air pollution will be a bigger issue? Your vote will be on the basis of air pollution? Absolutely. I'm Rajiv Batra. I represent the cycle market. I'm the president of the cycle market. I am also the general secretary or organizing secretary in CAT Delhi and Toy Association of India, right. Vice president. Definitely pollution levels today are going to play a role. See, if the politicians think that people and public is going to forget, they are not going to forget in a hurry. The rainy season, we remember what happened last time. We are not going to forget that in a hurry. The pollution levels, you know, the people are fed up with the excuses which have been made by the politicians from all parties over the years. It's really pathetic. They do not do anything. They know that air quality is going to worsen during this time. This worsening is because of climatic factors, no doubt, because of the parali burning, no doubt. But then there are some things you can do. Put up more smog towers. I don't think they are working, or they are just not there. Right. So they have to take other measures. Okay, parali we have identified as one of the major reasons. Fine. Why don't you just buy the hay from the farmers? Just buy it at any reasonable cost. Right. This can be one of the solution of the parali burning. Rightly said, because smog towers that he mentioned are not working right now in the Delhi NCR. It's a crore rupees project, but the smog towers that are present are currently switched off, not at all working right now. And parali comes out to be a very big reason. Sir, what do you think in your understanding that every year parali burns? Every year there is a war of words between the political parties regarding the parali burning. But right now Punjab is not there in the news very much because Aam Aadmi Party is accusing Haryana and UP for the air pollution right now. So what do you think? Is there a political game behind it? Are the political parties try to fool the people of Delhi? What is there in your understanding? मैम, सबसे पहले तो जो पराली का इशू है, पंजाब से बोला जाता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर थी या दूसरी पार्टीज की होती थी तो आम आदमी पार्टी एक इल्ज़ाम लगाती थी कि पंजाब गवर्नमेंट देखती नहीं है, पराली जलाती है, किसानों पर कोई नियंत्रण नहीं लेती।
उसका तो रीज़न उनकी तरफ से जो है वो मतलब बाद में वॉश्ड आउट हो गया, उन्होंने कहना चालू कर दिया नहीं हमने कंट्रोल कर लिया, जबकि कोई ऐसा है नहीं, कोई मेजरमेंट है नहीं कि जहाँ से पता चले कि कंट्रोल किया हुआ है। और जहाँ तक वो एयर पोल्यूशन की बात है, दिल्ली का अपना एयर पोल्यूशन बहुत है। ट्रैफिक देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, जगह जगह देख लीजिए कितनी कंजेशन है, कूड़ा नहीं उठता है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के इतने सारे काम हो रहे हैं, वर्किंग में हैं, जो अब इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, आपको पता है फरवरी में इलेक्शन है, और लास्ट मोमेंट पे इनको हरी हो गई है कि फटाफट काम कराने हैं। आप भी दिल्ली के वोटर हैं, इलेक्शन में एयर पोल्यूशन आपके दिमाग में रहेगा अपना वोट कास्ट करने से पहले? मैम बहुत सारे इशू होते हैं, पब्लिक लास्ट मोमेंट पे फिर वही पुराने इश्यूज पे आ जाती है। एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, उसकी वजह से गवर्नमेंट तभी अवेयर होगी अगर एक दो बार इलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा इशू बने। अदरवाइज तो ये फिर टाइम बाइंग होता है, थोड़े दिन आवाज़ चलती है जी पोल्यूशन हो गया, हाई PQ लेवल इतना आ गया, बाकी सब वैसे ही चलता रहता है, कोई ऐसा पॉलिटिक्स एवरी ईयर पॉलिटिक्स हैपेंस। आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पर रहते हैं। आपको प्रदूषण को लेकर कुछ समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं फिलहाल? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम या आंखों में इचनेस, कोई दिक्कत महसूस हो रही है? जी प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, आप खुद देखो, रात को अगर आप देखोगे तो तारे तक नहीं दिखाई देते हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है यहाँ पे। और इस चीज़ को मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार को लेके इसको काम करना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा ये हटके, क्योंकि केजरीवाल सरकार मुझे जहाँ तक लगती है कि एक साइड राजनीति करती है। अभी देखो दिवाली के टाइम आया है ना, तब इनका प्रदूषण याद आया क्योंकि पटाखे बैन करने हैं। कहना नहीं चाहिए, मतलब सीरियसली मुद्दा मैं कह रहा हूँ, मेरे अंदर जो है, तो उस टाइम पे इनको याद आया है। इससे पहले ये जब जेल से रिहा होके आए थे, तब इनके पार्टी के लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तब नहीं पॉल्यूशन था। अब दिवाली में लोग पटाखे फोड़ेंगे तो इनको पॉल्यूशन महसूस होगा उससे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफा राजनीति करते हैं। और इतना पॉल्यूशन से दिक्कत है तो सारी डीजल गाड़ियां बंद कराओ ना, बोलो इलेक्ट्रिफाइड चलेंगी, CNG कराओ, सारी की सारी डीजल गाड़ी एकदम बंद करा दो। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो डीजल चलाएं, पेट्रोल चलाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परेशान छोटे लोगों को किया जाता है। मैम So Simran, this is the anger inside people of the Delhi NCR, and not only Delhi NCR, people coming from outside also feeling this anger because of the pollution right now and the politics that is happening behind it also. And we'll go to Rajiv ji once again. Sir, what do you think can be the proper solutions? Because you said on the points. How are the expectation of the people when you're talking to voters? What we also need to understand is, if at all they are going to keep in mind the real issues of the Delhi NCR, which often get no space when we are talking about such voting processes which happen every once in 5 years. There are other issues which come to the forefront, but at the same time, Mehndi, what exactly are the expectations from the governments, from the Aam Aadmi Party at this point of time, from Atishi, who has just recently been the Chief Minister and presumed the chair, to tackle this issue as well? While I'll give you a moment to also speak to others, let me also go to one of my colleagues, Sambhav, who is joining me from Lakshmi Nagar, and bring us a sense of, because Lakshmi Nagar is that area, Sambhav, which is in fact is at the border of Delhi and UP, and is in fact massively impacted given the population, and it in fact the AQI also is severely high in that region. What are the people thinking about making pollution as one of their top expectations to be resolved by choosing to elect the next government in Delhi? Well, yes, we have been reporting on this issue since morning, and I was at Akshardham earlier in the morning, then at India Gate, and have spoken extensively on this issue. We have recorded many walkthroughs which we will play on air. And here in Lakshmi Nagar also, people are talking the same thing. Like earlier, pollution was not that big an issue, but gradually, as the air quality is deteriorating, and as the courts of the country now, especially the top court of the country, has very categorically questioned the governments and their inability to curb the pollution, it is becoming a voting issue as well in Delhi. I'll also try to connect here with the very local people on ground, the Redi Patri Walas. I will ask them to comment on that, and we'll try to connect a few people here in and around Delhi. I'll ask my video journalist to pan the camera to this shop. भाई साहब, दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है
और आप सीधे एक्सपोज रहते हैं, आपकी दुकान सड़क के किनारे है सुबह से शाम तक। कितना बड़ा ये मुद्दा ये चुनाव में बन सकता है? दिल्ली का चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे? क्या करें भाई? ये भाई तो भाई हेलो बात करो, हिंदी से बताएं, दिल्ली में चुनाव है, प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है। प्रदूषण से चुनाव का क्या लेना? आपको प्रदूषण से चुनाव में हमें कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी गरीबी में मरता है, जी लेता है। अमीर आदमी को है प्रदूषण से परेशानी। अच्छा, हाँ, इससे आप इलेक्शन का मामला जोड़ रहे हो, इससे पॉल्यूशन से इलेक्शन का क्या मामला? उससे क्या है? नहीं, आप बोल रहे हो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन से इलेक्शन का क्या मामला? देखिए कई और मुद्दे हैं जिससे इलेक्शन प्रभावित होता है, जैसे कि आप लोगों को फ्रीबीज मिलती है, हमें गरीबी से परेशानी है, पानी मिलती है, गंदगी में रहना, कितनी सफाई महत्वपूर्ण है, साफ पानी साफ हवा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। भाई सबसे पहले तो मोदी सरकार से बोलो कि महंगाई कम करे और व्यापार ज्यादा बढ़ाए। हाँ, जितना व्यापार बढ़ेगा उतनी जनता खुश रहेगी। अगर बीमारी हो भी रही है तो उसकी जेब में 4 पैसा होगा तो वो इलाज करवा लेगा, उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो मरेगा ही वो। आज क्या है, किसके पास पैसा है? वो भी पेटीएम कर देता, पैसा है किसके पास? आप बता दो किस मुद्दे पे बात कर रहे हो? आप ही बताओ मैंने। आप इलेक्शन के मुद्दे पर बात करो। तो पोल्यूशन तो अपने सही हो ही जाएगा, अब तो दिवाली पर तो सही आपको प्रदूषण महसूस होता है? नहीं, वो तो होता ही है, वो तो थोड़ा बहुत है। किसी प्रकार की सांस लेने में या ऐसे आंखों में जलन? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है वैसे तो। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं है वैसा तो। बाकी दिवाली में तो प्रदूषण तो होता ही है, बम पटाखे तो फूटेंगे थोड़ा बहुत तो फूटते ही, वो तो बम पटाखे तो वो तो होगा ही होगा थोड़ा बहुत तो। we'll try to connect few more people here around because this is one of the most populated area. Population wise it is much more crowded here and यहाँ पर कुछ रेडी पटरी वाले हैं, हम कोशिश करेंगे अगर वो बात करने के इच्छुक हो, महिलाएं हैं खासकर और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। कुछ प्रदूषण पे बात कुछ आप लोग करना चाहेंगे? हाँ, they are not very, I mean, all right, Sambhav, I'll request you to take your time and this. speak to the people around while I also get my other colleague Mehendi, who has been at Chandni Chowk, which is in fact at the front of the Red Fort, where at every year there is an address made on the public holidays as well by the Prime Minister as well. Mehendi, while you're speaking to the people around, also kindly get us a sense of what are the expectations primarily from the governments which are going to be in the fray, whether it's Aam Aadmi Party, Congress or the BJP, as far as the pollution centric issues are concerned. Right, Simran, we'll talk to people once again because this is a very prime location. We are in front of Red Fort also, and also I would like to show you the visuals of Red Fort right now. It can be seen covered with a thick layer also. The visuals are very blurry through camera and through naked eye also, but we'll try to understand what are the expectations of the people from the Delhi government also. Sir, what do you think as a Delhi voter also? What are your expectations from the government, keeping in mind these ground issues? Because pollution is a ground issue. Can these issues get neglected in the upcoming elections? What do you think? What is the expectation? I am not going to forget. I am not going to forget as a voter that we are breathing poison. Our kids are breathing poison. It's really bad. It's time politicians did something. The only way you can find a positive result is when, you know, one of the factors which politicians fear is the fear factor. If voters are strongly united on air pollution and it becomes a topic, then only the politicians will move. Believe me, they are not going to work otherwise. They are going to feel, okay, this is just a 1 month issue and people are going to forget it. But Politicians can forget it, but people will not forget it. You want to say? we have not forgotten the mess in the rainy season. We will not forget this also. And the government will have to come out with a concrete, workable plan. See, I am a businessman. I would always like to turn a situation into an opportunity. You can simply do it
by eliminating the parali issue. I told you, pay for the parali, the government should do. They pay a lot of subsidies, so why not here also? And make a commercial use out of it. Fine. Spend more money on smog towers. They may not be working 100%, but they are working 40%, 30%, whatever they are doing, contributing. Then vehicle pollution they have to reduce by getting in more EVs. सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी दिल्ली सरकार से आगे आने वाले चुनावों में भी, क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत ही ग्राउंड वाला मुद्दा है, साथ ही साथ पराली एक बड़ा इशू आपने बताया, सर ने भी बताया, लेकिन क्या व्हीकुलर पोल्यूशन भी आपको लगता है बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जितना भी % पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है? मैम, दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में बातें बहुत की कि हम ईवी ले आएंगे, ये ले आएंगे। आज से 8-10 साल पहले, 12 साल पहले जब शीला दीक्षित हुआ करती थी, उन्होंने उसकी विजनरी थी, उन्होंने CNG जब इंट्रोड्यूस की थी तो उन्होंने 20% पोल्यूशन कम कर दिया था। उसके बाद इतना पॉपुलेशन भी बढ़ी दिल्ली में, व्हीकल्स भी बढ़ गए और इनकी तो सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। अब जगह जगह आप देखिए EV के वो चार्जिंग पॉइंट बनाए हैं और उनका कोई यूज़ नहीं है और टूटे पड़े हैं, और ये बोलते हैं कि हम इतनी बसेस ला रहे हैं, इतने, फिर ये बात ले आते हैं कि LG साहब नहीं दे रहे, फंड नहीं दे रहे, फाइल नहीं क्लियर कर रहे। तो इनका कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। उस हिसाब से बस ये जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो सिर्फ यही देख के करते हैं कि बस अपना टाइम निकालो और उसके बाद ब्लेम कर दो सेंटर के ऊपर। अब कॉर्पोरेशन में देखिए, जैसे केजरीवाल जी हैं, सबसे बड़ा सिविक बॉडी का काम होता है सफाई रखना। जगह जगह आप देखिए कूड़े के ढेर लगे होंगे, सड़कें कभी क्लीन नहीं होती, वो पानी के टैंकर चलते हैं, वो भी सब प्राइवेट ठेके पे दिए हुए हैं। उससे मतलब one of the also major issues, because Yamuna is also facing a very critical issue right now regarding the toxic foam. सर, आपको क्या लगता है कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली में क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं और दिल्ली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं कि प्रदूषण को लेकर क्या कुछ सॉल्यूशंस या समाधान लाए जाए? दिल्ली सरकार की जो केजरीवाल जो अभी उसको जेल में डाला गया, वो जेल से बाहर आ गया, लेकिन वो काम दाम में तो है नहीं। अभी तो ऐसे ही सरकार है उन्हीं का, लेकिन उसका दूसरा आदमी है, उसका तो कोई नया कुछ का कोई संविधान है नहीं। अब आने वाला चुनाव में अगर केजरीवाल आता है तो अच्छा काम करेगा और उम्मीद। आप दिल्ली के ही रहने वाले? हाँ जी, मैं जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो क्या आपके दिमाग में ये जो वायु प्रदूषण है ये एक बड़ा मुद्दा लेके जाएंगे आप वोट डालने? हाँ, वोट डालने जाएंगे और इंशाल्लाह केजरीवाल आएगा। मैं जमा मस्जिद से हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, उम्मीद क्या है केजरीवाल सरकार से आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि दिक्कत की बात करें तो वायु प्रदूषण बड़ी दिक्कत है, यमुना जो है वो झाग से भरी हुई है, तो उम्मीदें क्या है? ग्राउंड पर क्या काम करना चाहिए सरकार को? उनको टाइम अगर मिलेगा या टाइम देता है या सरकार बनती है तो आगे चल के जितना भी काम किया है और वो काम दिखाएंगे, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं आनी चाहिए। बस हमारा कहना ही है, तो वो काम करने चाहिए। So this is the, Simran, these are the voices from the people right now, and they're saying that there is two sides of the coins right now. One is that there is a blame game happening, there is a blame politics happening that Arvind Kejriwal's government is doing, because every year it's the same situation, war of words happen, politics escalates, but there is no such solution on the ground level right now. All the solutions are being temporary. It is not me who is saying this, it is the people of Delhi who are saying this, that all the solutions that are being taken by the Kejriwal government are right now temporary but not permanent. सर, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो प्रदूषण में एक्सपेक्टेशन क्या होगी यहाँ दिल्ली सरकार से कि किस तरीके से प्रदूषण से निजात पाई जा सके? मैम, सबसे पहली बात तो ये केजरीवाल सरकार से हो ही नहीं पाएगी जहाँ तक मुझे दिखता है, क्योंकि कुछ साल पहले इन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले, आज पिछले 10 सालों से हैं, यमुना को साफ कराने का बात किया था इन्होंने, बजट भी पास कराया, लेकिन वो बजट पता नहीं कहाँ गया, किसी को नहीं पता। यमुना नदी को साफ कराने की जगह उसको नाला बना के रख दिया। अभी कुछ दिन बाद छठ पूजा आने वाला है, लोग जाके नाले में खड़े होकर पूजा करेंगे क्या? लोगों को ये समझना चाहिए। और जहाँ तक देख रहे हो पिछले 10 सालों से एक भी काम मुझे ऐसा नहीं लगा जिसमें, अभी देखो थोड़े दिन पहले पानी की बहुत दिक्कत आई थी दिल्ली में, आतिशी जी जल बोर्ड की अध्यक्ष थी, जाके हरियाणा जल बोर्ड से बात करके उस चीज़ को सॉल्व करने की जगह, जहाँ पाइपें लीक हो रही थी उसको सॉल्व करने की जगह ये खुद धरना प्रदर्शन में बैठ गई। ठीक है, तो इनको काम करना चाहिए, तो ये धरना प्रदर्शन में बढ़ गई। अब कोई दिक्कत होता है, मान लो अगर आप घर की मुखिया हो, कोई दिक्कत होगा तो आप उससे लड़ाई करोगे कि मतलब उस प्रॉब्लम से लड़ोगे कि आप खुद धरने पे बैठ जाओगे, तो पूरा परिवार तो ऐसे ही टूट जाएगा ना। तो इनको काम करना नहीं आता ढंग से जैसे करना चाहिए। और एयर पोल्यूशन, अभी वाटर पोल्यूशन की वजह, वाटर की दिक्कत की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। अभी कुछ दिन बाद एयर पोल्यूशन, जगह जगह बोरिंग बहुत किया है, उनका कोई नहीं है। अगर नाला खुदा गया है तो टूट गया है तो पानी तो जगह जगह खराब हो गई, फिर उसको रिपेयरिंग नहीं। आज इधर देखो सारे कॉलोनियों में काम हो रहा है,
रोड का। हम क्यों सर बोलेंगे नहीं हो रहा है। ऐसा चुनाव आता है काम मैम, जब इनका काम तब स्टार्ट होता है जब चुनाव आ जाता है, उससे पहले इनको कोई कुछ भी याद नहीं रहता। एयर पोल्यूशन आज से समस्या नहीं है, दिल्ली की बहुत पुरानी समस्या है। इनके ऊपर मुझे नहीं लगता कभी बैठ के इन्होंने ढंग से चर्चा भी किया होगा कि एयर पोल्यूशन खत्म कैसे करें। आने वाले दिनों में, कभी कोरोना में मास्क लगा के घूमते थे, हमें कुछ दिनों में यहाँ पे लगा के घूमना पड़ेगा। Right. So Simran, people are very angry, ji Rajiv ji. पेशेंट पब्लिक वोट आउट कर देगी जो लोग काम नहीं करते। ये हमने Are you having breathing problems due to the air pollution? Are your eyes itchy? Your throat is swelling? What is happening right now in terms of health? see the biggest symptomatic change I notice is that in the morning the throat is a little heavy. There's a lot of sputum which is thick, and that phlegm is because of the air pollution. You can actually feel it. My son is in All right, Canada. Mehndi. Thank you for bringing us these voices of the voters from the ground, in fact, who are thinking about making pollution as one of the issues while voting for Delhi and its government next year. In fact, while Delhi continues to choke at its worst, and there is a smoke show every year in the same repetition of an episode as winter approaches in the national capital. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.